grateful that your lordship has taken cognizance of what has taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to two questions that have arisen here during the course of hearing. One was, हाँ साहब थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. इस केस को कुछ We have not taken any मतलब let's चलिए अब केस पे बात करें. जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ. केस पे बात करें. परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था. The two places इस्लामाबाद. हाँ साहब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं. नहीं सर बात तो मेरी मुकम्मल कर लेने. उसका आप नोटिस ले रहे हैं. मेरा फर्ज है मैं आप जनाब तक पहुँचाऊँ. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers and they cannot assemble. खान साहब आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं तो अगर आपकी बात ये बात है तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो. फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं ही नहीं. तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में. इसलिए कि अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना. अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते और हम चुपके से जाके अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहाँ सिक्योरिटी देते हैं. तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं. नहीं मैंने कहा जब आपने जो बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे. जी 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 चलिए. We still have a duty to चलिए let's proceed with the notice case. to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. जी. Why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब जी जी. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना. अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में, उन्होंने बात भी की. तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में. सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है. किसी को आने की जरूरत नहीं है. जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स ले आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है. मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. व्हाई वी प्रेफर्ड, बिकॉज द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स वी फील इज स्टिल द पेशावर हाई कोर्ट, बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर बीइंग कैरिड आउट. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता. पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में. मगर ये देखें बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे. एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई. 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट. लाहौर विच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच. तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए. इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात. सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए. हाँ. वो भी मान लेते हैं, मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी ना, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच. वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपहेल्ड हो गया है. हम उसको भी छोड़ देते हैं. हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, द 5 मेंबर बेंच जजमेंट, जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है. नहीं, अब आज भी जिंदा है केस, पेंडिंग पड़ा है. कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच डिड नॉट से दैट आई मूव्ड एन एप्लीकेशन विथड्रॉइंग द पिटीशन और एनीथिंग. बट एनीवेज इवन इफ ही डज सो नाउ, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था. ये हम सब गुजरे स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिस्डिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी. देखिए we have all played this game, पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिस्डिक्शन का. कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इंपोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBR इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिस्डिक्शन. तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है.
experiences हैं हमारे, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में टाइम चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the propositions, few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if you may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. Ji. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional / statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not so be. If he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 Clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. If another party aggrieved can come home. ECP can't come. अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है. ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 members are very recent judgments.
One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी, वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का वो जी सर। हाँ वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना कर चाहें ली। वो तो अच्छा। आपने पहले ही दिन बता दिया था। एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1, there is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है। वही 2 जज। हाँ वो तो मैंने नोट किए हुए हैं। एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरे केस में ओम्बड्समैन था। इलेक्शन पिटीशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो? क्या आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकती? ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू। एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए। उसकी कॉपी से आपको दे दी। दे दे। A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी 4 मेंबर है। आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है, महसूस आपके इसके 2 दे रहे थे ना ये बार-बार। अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये right of information वाला है। मुख्तार अहमद अली वाला केस। हाँ तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन। नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर। दिस इज व्हाट हैज बीन एज आई सी हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट। May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता। जी मैं अभी another 5 minutes I'll provide it. आप पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ। पढ़ लीजिए। The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled was out of the recommendation of the disciplinary committee. Therefore, it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these 2 cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment in neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. The registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment, they cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue but you can't defend. ये क्या बात हुई?
No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in अगर dispute. कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया। तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस। देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे। सर देखिए, वो आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, you can't do that because we are not there to. चलिए, आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का जी। बिफोर द 18th अमेंडमेंट, before the 18th amendment, Let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं। उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा एट द एंड कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको, बिकॉज द थिंग इज, नहीं, आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें। मैं उसके एंड पर बात करूंगा। मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी, आर्टिकल 17, उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के। वो पुराना पढ़ ली 17th prior to 2010, before Every political party shall, subject to law, hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही। अब ये खत्म हो गई है। Every political party shall, subject to law, hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted, Yes, under the 18th but amendment. it was brought back by 207 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत। जी। Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act, or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore, my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election,
is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का। वो एक उनके सेक्शंस में है, तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए। देखिए वो एक और एस्पेक्ट है, बिल्कुल एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली जफर कि it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If your Lordship kindly consider Article 219. So. Opposition to मैं read Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया, हाँ पॉइंट बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura, Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of Parliament as a statutory body, it is performing that function. So under Article 219, any अगर आप 220 भी पढ़ लें, हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं. proviso. नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. Absolutely. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया है कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. Yes, sir.
220 is not with regard to functions, is regard to. But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं. Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं. बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है. इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर. Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. अगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है. कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं, घर में बैठे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को. ये तो doesn't stand to logic at all. No, why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना. ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं. Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना. So that's it. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं. Pages. अली जफर साहब ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं? Partly argued that. Yes. अपनी बुक को मेरे को ले जाओ. मैं आपके जुरिसडिक्शन में जा रहा हूँ. आप अपने दूध में. Partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की petition में there we have clearly taken the position वो of बताएं ना, वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? grounds before the Peshawar High Court. खुद ECP ने लेना है, उन्होंने थोड़ी लेना है. हाँ, वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है. आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? डिस्क्रिमिनेशन का होगा ये. और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है. जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना. नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है. और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है. हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है. तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया ना हाई कोर्ट ने उस पर कोई फाइंडिंग दी. नहीं, कई चीजें जो हैं
Sir, this is ground W on page 49. 49 Page 49. ग्राउंड डब्ल्यू W, sir. हाँ पढ़ लें Or of the first paper book 1. हाँ May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना आपने कोई देखें फिर आपको नहीं एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी जी फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था पहली बात फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी परसों हमने केस चलाया है एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी ठीक है उसका वजूद ही खत्म कर दिया और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं सर वो अपनी जगह लेकिन ये आपका कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है तो कैसे आप कह सकते हैं मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटीशनर ने लगाया है उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या बस खुद नोटिस ले लें सर बात ये है ये ईसीपी पिक एंड चूज कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना नहीं कहने से लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे बिल्कुल सही नहीं लिया आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत देते हैं साल की उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है मैंने 2021 में इलेक्शन कराया इंटर पार्टी इलेक्शन उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन आपको भी पता है अभी देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते बात ये है अब वो वजूदीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे कौन सा साल था वो कितना बड़ा झगड़ा हो गया था जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं वो कौन से इलेक्शन से ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कब की बात है वो ये 2012-13 तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूदीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया हम इसी के पास नहीं गए थे हम ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए क्या हो गया वो हुआ था क्या उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है वो इज अनदर स्टोरी बहुत नो बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ देखिए सम व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been, whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ ये इंटरनल मैटर है पार्टी का पार्टी तो कोई चीज नहीं होती पार्टी मीन्स द पीपल वेरी राइटली आर्ग्यूड देखिए सॉरी पार्टी मीन्स द पीपल I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है उनको करने दें आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें वो ये राइटली कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ
हाँ, ये उसके पास वो कह रहे हैं, उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। In view of this judgment, it is judgment in rem in my view. It's not personam. उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो, तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी, वो जो 2017 के लॉ के नहीं तो इसका जी, 2017 आप देखिए, अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी, क्योंकि क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज नहीं, वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारे दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ। नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि मैं इलेक्शन में, अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। In this case, Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर के जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. तो ये तो इन रेम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज की बात सब पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा, ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ईसीपी आज के बाद इलेक्शन क्यों करें, पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन, अगर ये बात है। ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है, basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की, then in future no political party will be subject to the inter-party election. If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है, जिस तरह। चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी, अभी भी नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये नई बात होती है मैं जरूर लिखता हूँ। 3 डॉक्यूमेंट्स जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो जनाब की दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी। ये देखिए, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें, देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन जेल किया है कि ये क्या करें हम, उनको दे दिया राइटली सो। देखिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया, हमारे साथ क्यों गलत। हम एक और बात कर लेते हैं जी। मर्डर इज अ क्राइम, मर्डर इज अ क्राइम नो डाउट जी। एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ एफआईआर। एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फॉरेन रजिस्टर कर लेता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे। कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan
gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. Ya to kahin ye crime nahi hai, wo ek alag baat hai. So I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party कि जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है. मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है, वो आप उस पे फोकस कीजिए ना. डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा. देता है, लेकिन मैं अर्ज करूँ, एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. There can be a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है. यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए. अच्छा, एक मिनट रुक जाइए. जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, ANP कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? वो नहीं, देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना. जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी. उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया. फिर आप ये भी ANP का लिया कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंस. मगर देखिए आपके अपने कॉन्सिक्वेंस. आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर. आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना. अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया या PDM आ गई या केयरटेकर्स आ गए, हमें तंग कर रहे हैं. मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं करा है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें. हाँ ठीक. तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा. सर वो अगर एक ऑर्डर पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था. नहीं, मगर आप लीगल बात करें ना. आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं. नहीं, मैं तो फिर एक्सरसाइजिंग पावर्स इन ए डिस्क्रिमिनेटरी मैनर. नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया इलेक्शन सिंबल, हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all parties equally. वो हमें we got it. आगे बढ़ते हैं. जी. So ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा. Discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं. हाँ, नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to know. मैं एक दफा contest किया है and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात, मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता. मैं चल रहा हूँ. Next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on 2 judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है. Not mandatory. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore, I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66.
Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993 Supreme Court 473 Mia Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199 1B 1A तो आपने 2. मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगली. ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर कर. तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने, आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा. Yes, sir. It says settled law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? Point ये है that I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. इसमें clause 2. Declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the Federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my. अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province. They'll say we don't do this either. We don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But देखिए ना, declaring that any act or proceeding taken within the territory, अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है. इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is your ownership impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें. बस जल्दी कर देता हूँ. आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी. My submission is
it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been ये राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो, आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज। जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ भाई, राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू वो तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा। राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल। Why a person's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party? They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP. Time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship want to saying suffer that the consequences. I should conclude early so that. Yes. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. Time and again. But ये allegation आपने नहीं लगाया। देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody, making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up, why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that the interference and order passed by the election commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality. For something very minor within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed a case under no provision of the election. आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested in election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, founding member है वो. Sir, founding member if he turns against his party, तो क्या वो party उसको रखने की compulsion है? देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो. जी अब पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है?
कि जी ये ऐसे ना करो, और अमेरिका में भी जो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority, but subsequently with a lapse of time they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है। मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें, क्योंकि आपने खुद देखी, तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he come a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है। नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात सुन लीजिए। नहीं आप इसका जवाब दे देना, आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice। दिखा देना वो शो कॉज नोटिस। सर वो तो लगाया हुआ है। कहीं नहीं लगाया। in any case नहीं in any case नहीं दिखाई हमें। देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नैनी केस। देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है। आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म। वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया। देखिए एक आदमी, देखिए नो आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है। वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू। चलें तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना। चैलेंज नॉट us. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against his party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना। अब बाबर एस अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म। अब ये आपके देखिए मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल हफीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे। मैं मिराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था। He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. तो आपकी पार्टी में आ गए He left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना। अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। क्यों एक तो इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है। इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, ये बात बार सुन चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल आगे खान साहब भी वर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली। अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें। 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, हम कब मना कर रहे हैं? अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए उसके तहत। सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको। क्यों छोड़े हम भाई? वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है। अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को। सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, देन ही वुड हैव बीन ए पिटिशनर दैट he has been expelled। दिखाइए ना मैंने ये एक्सपेल्ड किया हुआ है। वो तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि तो आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आप ये कहने से बस काफी है। काफी है। पार्टी से नहीं, अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चैलेंज दैट टर्मिनेशन। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow,
How would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my No, you under should show section me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूँगा. You don't prove a negative, you prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of पार्टी law. आप खुद पार्टी हो फिर को मैं ही डिनाई कर रहा हूँ तो देखिए सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा ना ये सर चलिए खैर आगे बढ़े we have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol ये एक अलग बात is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात हमने नोट कर ली. Next point The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब एक बात आ जाएगी. Do you deprive 850,000 of your memberships for the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम. उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं. यहाँ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो. आज बाय दिस एक्ट ऑफ ACP दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 7. साहब ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना. ठीक है ना. अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को. इसको आर्टिकल 2A के तहत भी देखें ना. हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब की ठीक है लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दें. हाँ पढ़े मगर टाइम की बात है फिर. 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है. सर इसमें ये कहा है wherein wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक political party जिसकी perhaps बहुत बड़ी following है उसको election से बाहर कर देंगे तो फिर उस state को कौन represent करेगा? chosen representative तो बहुत सारे फारिग हो गए. नतीजा क्या है ऐसे election का जिसमें एक popular party with following is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even for 10 million वाली बात हो गई ना. आगे बढ़ते हैं ना. अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence. That the Constitution is equally a legal and a political document. So no court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore,
depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this honorable court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this honorable court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this honorable court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maulid Tamiz's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. जी लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing respondent number 10. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की